Hello and welcome to A for Arsenal. My name is Daksh and welcome to another video on the channel. हाँ, इस चैनल पे वीडियो भी बनती है. I know it's been a while but just पढ़ाई and job and just takes too much time यार. And आज मेरी छुट्टी थी so I could watch the match. By the way, new mic कैसा लग रहा है? All RGB. But yeah, new mic. I'm gonna try and make content as regularly as possible. I'm still trying to adjust, man. It's not easy finding time, and I want to do justice to my content, to my videos. And yeah, I've tried to make myself visible. मैं मोहक भाई के stream पे आता हूँ. I try to be in the comments of other, content creators and everything. So I've been trying, but I'll try harder. That's all I can say. So let's get into the games which happened yesterday for you and today for me. The first game we're going to talk about is Cameroon and Serbia. देखो Cameroon Serbia ended 3-3, but at one point Serbia was up by 2 goals against Cameroon. And मैं जब निकल रहा था I was like चलो ठीक है घर पे काफ़ी देख ले, थोड़ा बाहर भी निकलते हैं, बाहर जाके मैच देखेंगे कहीं. By the time I reached the bar 3-1 का 3-3 हो गया था. And Vincent Abubakar, जिसको बहुत क्रिटिसिज्म मिला है फॉर अ स्टेटमेंट रिलेटेड टू द फैक्ट दैट ही सेड आई एम एज गुड एज साला, आई जस्ट डोंट प्ले फॉर अ बिग क्लब. एंड काफ़ी लोगों ने रिडिक्यूल किया था, बट हिज गोल टुडे, ओ माय गॉड, इफ़ यू हैवंट सीन दिस गेम एटलीस्ट सी हिज गोल. पूरी गेम देखोगे तो बहुत रोमांचक गेम लगेगा, बहुत इंटेंस गेम था. बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कोई डिफेंस था ही नहीं, बोथ टीम्स वर अटैकिंग यार. एंड दैट वाज आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम in this World Cup, I felt so close and so attached to an international match. Even though there have been really great matches, Saudi Arabia beating Argentina, Japan beating Germany, Spain का 7-0 demolition, France demolishing teams 4-1, 2-0, जो भी था. But this was the game that really got me hooked on to the World Cup today. So 3-1 से घाना ने 3-3 कर दिया. Oh sorry, 3-1 से कैमरून ने 3-3 कर दिया. एंड भाई दैट वाज अ ग्रेट मैच. द नेक्स्ट गेम जिसमें घाना एक्चुअली खेली थी वाज अगेंस्ट साउथ कोरिया. एंड साउथ कोरिया इज़ अ गुड टीम यार. लास्ट टाइम उन्होंने वर्ल्ड कप में आई थिंक जर्मनी को नॉकआउट किया था. एंड दे हैव गुड प्लेयर्स स्पेशली सॉन. बट जब सॉन परफॉर्म नहीं कर रहा है तो यार पूरी टीम परफॉर्म नहीं कर रही है. एंड आई थिंक इट्स वर्चुअली गारंटीड दैट साउथ कोरिया इज़ आउट and Son will have an earlier World Cup exit, a long break till the Premier League resumes. And I'm so happy that non-Asian teams are going through, but I'm so sad that Ghana को आगे मिलने का मौका मिल गया because Thomas Partey यार, I don't, as much as I love Thomas, I don't want him to play so much कि वो इंजर हो जाए. because यार जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है, जैसे इस इंटेंसिटी में, ये सेकंड गेम 3-2 जो एंड हुई थी, इस गेम में भी जो इंटेंसिटी थी, पार्टे 100% इंजर होने वाला. एंड वी नीड अ प्लेयर इन जनवरी. बट विल टॉक अबाउट आर्सेनल इन अ बिट. खैर दिस गेम में भी एट वन पॉइंट इट वाज 2-0 टू घाना. एंड देन साउथ कोरिया पुल 2 goals बैक. एंड लग रहा था शिश ये क्या कम बैक कर पाएंगे. बट नहीं, आई थिंक कुडूस ने गोल किया, बहुत अच्छा गोल था. एंड घाना केम आउट 3-2 winners. Son had to cry at the end, very unfortunately for him. I hate the fact he plays for Tottenham, but you can't really hate the guy. So sad for him. उसके बाद Brazil and Switzerland. Casemiro का बुलेट गोल ये गेम में नहीं देख पाया because I still had a meeting today. But मैंने गोल की हाईलाइट देखी थी. And Casemiro, man, what a great World Cup for United players. हाँ क्या contrasting fortunes. City dominating in the league, second है चलो अभी of course after Arsenal, but United जो initially struggle कर रही थी. So City के players have had a terrible World Cup. I'm gonna make a video on that as well. And United के players are having an incredible World Cup, from Harry Maguire, Rashford, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo. You can name, even Fred today played really well. Casemiro scored a goal. Anthony was playing really well for Brazil. जितने भी टाइम के लिए वो आता है. United players are on a roll, man. It's good. It's going to be a very interesting second half of the Premier League. Brazil, Switzerland के बाद Portugal, Uruguay जो मैंने full game देखा मोहक के stream पे यार. And I think on the balance Portugal were deserved winners. Uruguay बहुत negative खेल रहे थे, बहुत पीछे चल के खेल रहे थे. And to be honest, apart from a few moments जब वो बेंटनकोर ने dribble करके forced a save out of Diogo Costa,
पोर्चुगल का कीपर एंड दैट अनदर जब गोमेज का शॉट था जो बिल्कुल पोस्ट से लग के गया. अदर देन दैट यार पोर्चुगल utterly deserved to win. They were dominant, they were aggressive, they were dynamic, and Bruno Fernandes, what a player. Almost, if I did not hate him for all his diving and all his crying and जितने भी fouls वो मांगता है, I would have said he's world class. But मेरे पर्सनल बायसेस बीच में आ जाते हैं, so I can't really help it. But Bruno Fernandes played a really good game, deserved man of the match, and I think 2 goals and 2 assists. That's his goals plus assist combination, and he's tied with Kylian Mbappe in that respect. Kylian Mbappe, of course, with 3 goals and 1 assist. So same contributions. But yeah, man, he is a top player, and he's a top player of the tournament. So that was a great game by Bruno Fernandes and Portugal. Now let's talk about the FA Cup draw यार. FA Cup draw हो गया है and of course क्योंकि थर्ड राउंड है तो काफ़ी सारे लोअर लीग टीम्स हैं बट कुछ काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग मैचेस हुए हैं. द मोस्ट फनीस्ट एक्चुअली गाइज इज़ चेल्सी एंड मैन सिटी. आई मीन एज एन आर्सेनल फैन आई एम कम्प्लीटली हैप्पी कि मैन सिटी और चेल्सी को खेलना पड़ रहा है. वन ऑफ देम इज गोना गेट नॉक्ड आउट. देयर आर सम अदर गेम्स एज वेल. टॉटनहम आर प्लेइंग पोर्ट्समथ. इवन दो पोर्ट्समथ लोअर लीग टीम है, you don't know what you'll get out of Tottenham. Sometimes Tottenham play really well. Sometimes you just don't know what Tottenham will show up. And even though Tottenham has good depth, Portsmouth maybe can pull off an upset. I mean, यार ये Tottenham Bournemouth से हारते बची है यार. So I don't really know what's gonna happen. Brentford and West Ham are playing together. Another 2 Premier League teams that are going to play together. Bournemouth and Burnley of course जब championship में खेलती है against Bournemouth who just came up from the championship. उसके अलावा of course we have to talk about Oxford versus Arsenal. Arsenal being drawn against Oxford City away from home should not be a tough match on paper, but we don't know who's going to be available. We don't know who's injured and who needs a rest. Maybe we'll just play our youth players, and when it's youth players then कुछ भी हो सकता है. In other games, Liverpool play against Wolves. I don't see any problems for Liverpool. And बाकी सारा I think एक ही और है Manchester United versus Everton that I'll look at, because again 2 Premier League clubs and Manchester United के players like I said are having an incredible World Cup. अब मुझे देखना है कि how they come back from the season. Does the fatigue affect them? ये जो इतना अच्छा खेल रहे, will it be at the cost of United's season? तो खैर ये था FA कप का ड्रॉ को. नाउ मोहक की स्ट्रीम पे टुवर्ड्स द एंड आई टच्ड अपॉन अ फैक्ट कि यार हु इज़ पोर्चुगल अ टॉप 5 टीम, एंड काफ़ी सारे ओपिनियंस थे. आई थिंक डेफिनेटली फ्रांस, ब्राज़ील एंड स्पेन को सबने कहा था टॉप 3 है. 4th लोगों ने कहा चलो अर्जेंटीना डिज़र्व टू बी देयर. 5th टीम का काफ़ी डाउट था. आई एम गोना मेक अ वीडियो ऑन इट, एंड आई थिंक माई चॉइसेस might surprise a few people and might anger a few people, because I don't have the same choice, especially for my top 5. But before that, in this video we will talk about the players of the tournament. Now possible player of the tournament we can go into through various categories. एक होती है average rating जो काफ़ी सारे अब newspapers, journalists, एप्स लाइक वन फुटबॉल, सोफा स्कोर, ये सब देती हैं. तो उसके बेसिस पे हो सकता है, गोल्स के बेसिस पे हो सकता है. गोल्स के बेसिस पे अगर आप देखो, एनर वेलेंसिया 3 गोल्स, किलियन एम्बापे 3 गोल्स एंड ब्रूनो फर्नांडिस 2 गोल्स. तो दीज आर द टॉप 3 प्लेयर्स जिन्होंने स्कोर किए हैं. ऑफकोर्स आई एम प्रीटी श्योर किसी और ने भी, जैसे टैरेमी ने 2 गोल करे हैं, लायनल मेसी ने 2 गोल करे हैं, कुडुस ने 2 गोल करे, जिरू ने 2 गोल करे हैं. मोस्ट पीपल आर ऑन 2 गोल्स. But if you bring up assists, then Bruno Fernandes can be said as a top 3 player. Bruno Fernandes, of course, 2 assists. Theo Fernandes, 2 assists. Jordi Alba, 2 assists. So, goals le, assists le, why not combine them both into goals plus assists? Now, I know इसमें defenders and fullbacks include नहीं होंगे. But yeah, we're trying to figure out the player of the tournament so far. So, Kylian Mbappe, 4 goals plus assists. Bruno Fernandes, 4 goals plus assists. 4 goals plus assists. एनर वेलेंसिया 3 goals plus assists, क्योंकि इनके 3 गोल हैं और 0 assists हैं. So if I had to choose a player of the tournament, I would say,
एंड आई नो पोर्चुगल ने अच्छा खेला एंड रीसेंसी बायस की वजह से काफ़ी लोग कहेंगे ब्रूनो फर्नांडिस, बट आई थिंक इट हैज़ टू बी किलियन एम्बापे. ही इज़ प्लेइंग सो वेल फॉर फ्रांस. जो स्पेशली उनका लास्ट गेम था, मैं किसके अगेंस्ट था मैं भूल गया यार, डेनमार्क के अगेंस्ट था. नो स्पेस नो टाइम, सेकंड में गोल मार दिया. ही ऑपरेट्स इन क्लोज स्पेसेस, इज इंक्रेडिबल एट ड्रिबलिंग, इज इंक्रेडिबल एट शूटिंग. देयर इज़ नथिंग किलियन एम्बापे कांट डू. एंड यार उससे दिख जाता है हाउ गुड किलियन एम्बापे इज़ एज अ प्लेयर. So for me, the player of the tournament right now is Kylian Mbappe, but Bruno Fernandes is a close second. I won't even put Lionel Messi away from that podium as well, even though he has 2 goals and no assists. But his individual brilliance has such a huge impact on Argentina. तो आप बताइए आपके हिसाब से player of the tournament so far कौन है and why? अगर आपके लिए अर्जेंटीना है, maybe it's because you feel उसका impact बहुत ज़्यादा है. If it's Ener Valencia, it can be because, well, Ecuador is a weaker team and इस weaker team में stand out करना बहुत difficult है with the quality of players you have, and still you are among the top scorers, joint top scorer of the entire tournament. So who is your player of the tournament? Let me know, and thank you for 1,000 subs जिस पे एक separate video आने वाला है. Thank you so much for watching. Come on you Gunners.